एक्सरसाइज सेट 2.1 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। सो वेरी इजी, 1, 2 एंड 3 डिग्री पोलिनोमियल का हमारे पास हमें एग्जांपल लिखना है। लिख देंगे। देखो, अगर डिग्री 1 का एग्जांपल लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं, 2x + 3। अगर आप देखेंगे तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1, और वेरिएबल की पावर 1 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अगर हमें डिग्री 2 में पोलिनोमियल लिखनी है तो हम कोई भी पोलिनोमियल लिख सकते हैं। वेरिएबल यू कैन टेक एनी वेरिएबल यू वांट, इट कैन बी a b c d up to so on alphabets, you can choose any one. So if I write here, it can be 4x² plus 2x plus it can be anything, 3. So this is the degree, this is a polynomial of degree 2. And if we want to write the polynomial of degree 3, that can be anything like this. It can be x³ also. Okay, so degree 3, and it is a monomial because it has only one term. So you can write any cubic polynomial like this. We can write y power 3 plus 2y² plus y plus 3, whatever we can write like this. Okay, so degree of polynomial is 1, 2 and 3. So you know that degree of 1 is called linear polynomial, degree of 2 is called quadratic polynomial, and degree 3 is called cubic polynomial. I hope you understand.